As in today's video, I will tell you the most dramatic pattern we see here for Bitcoin, and this is very disturbing. But yes, we can say that we might see a bearish move, most probably, but we can see a bullish pattern also. So let's get started. Hey guys, welcome to Bit by Bit Crypto. My name is Krish. And guys, let me tell you something. As you can see this chart, we can see here guys, this is a 50 and 200 period moving average, and what we are seeing here, just wait a minute, let me just, yeah. So the 50 and the 200 period moving average is showing a death cross after a day or two, I guess, or in this week. And if this happens, then we are pretty bearish for the whole crypto market. Because guys, हमने जब भी एक डेथ क्रॉस देखा है, प्राइजेस ड्रास्टिकली नीचे गए हैं, एंड पहले से हम एक काफ़ी 55% करेक्शन देख चुके हैं बिटकॉइन के प्राइसेस में उसके ऑल टाइम हाई से, एंड फर्दर करेक्शंस अगर बिटकॉइन में हुए, then I don't know what to say, but what I believe is opportunity. अगर आगे भी करेक्शन हुआ, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है और बाय करने की. अगर आप डर के छोड़ दे रहे हो कि यार इतना बड़ा करेक्शन हो गया, गाइज हमने 86% करेक्शन देखा बिटकॉइन में, एंड अभी सिर्फ 55% हुआ. तो बिटकॉइन के चार्ट में अगर आप जाओगे पहले, तो आपको 86% तक का करेक्शन दिखेगा. ऑन एन एवरेज 60-65% का करेक्शन मिलता है. अभी तो हम 55% करेक्शन पे ही आए हैं. सो अगर इसके नीचे और प्राइसेस जाता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आम बात है. बट गाइज ऐसा नहीं है कि डेथ क्रॉस होने के बाद, यहाँ पे ये डेथ क्रॉस होने के बाद हम सिर्फ बेरिश ही साइकिल में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है. Like out of 10 times, out of 7 times, we have seen only 3 times the drastically bearish pattern in Bitcoin's price. But जब भी डेथ क्रॉस हुआ है, 7 बार, 10 में से 7 बार ऐसा हुआ है कि उसके बाद प्राइस तेजी से ऊपर गया है. गाइस बहुत तेजी से ऊपर गया, लाइक 70-80-100% आई गेस, इतने तेजी से गया. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यार अभी तो प्राइस और नीचे जाने वाला है तो बेच दे क्या. नहीं गाइस, जस्ट होल्ड. इफ यू आर नॉट अ ट्रेडर, जस्ट डोंट ट्राई टू लाइक सेल कॉइन्स just because there is some death cross we can see in the future. Guys, अगर डेथ क्रॉस हुआ भी, प्राइसेस जा सकते हैं काफ़ी नीचे, पर what I believe is it won't go below $23,000. एंड अगर वो जाते भी नीचे तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर भी आएंगे. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हुआ है कि 10 में से 7 बार जब हमने डेथ क्रॉस देखा, सिर्फ 3 बार ड्रास्टिकली प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गए. बट 7 टाइम्स ऐसा हुआ है कि प्राइसेस डेथ क्रॉस हुआ है एंड उसके अ वीक, लाइक 2 वीक्स और 3 वीक्स के बाद प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर गए हैं. एंड वी हैव सीन सम मैसिव गेन्स इन बिटकॉइंस प्राइस. एंड अगर ऐसा हुआ तो वी आर प्रिटी बुलिश फॉर, because what I believe is $100,000 by the end of this year. I still believe, like abhi Bitcoin is at $35,000 and I believe that it will reach $100,000 by the end of this year. अभी जून चल रहा है and I am thinking कि दिसंबर एंडिंग तक ये पहुंच जाएगा $100,000. I am still bullish because I can see the death cross. I can see there is a like death cross happening for sure. But हो रहा है फिर भी I believe that it will reach $100,000 because guys, that's how Bitcoin's prices have shown us in the past, in the whole past and a whole
recent years that Bitcoin will show a massive gain after a death cross, because after death cross there will be a dip in the Bitcoin's price, but what I think is it will move to like 80,000 to 100,000 US dollars by the end of 2021. So guys, just hold. If it is going down, if we will see a very dramatic price dip in the Bitcoin's price, then guys, it is the best opportunity to buy. Because whenever someone texts me कि price is going down, price is going down, I reply that oh my god, अभी और खरीदना होगा और accumulate करना होगा, because that's what I think. Because whenever there is a market dip, that is the opportunity you should like, that is the best opportunity you should use to buy coins at very lower prices. So that's it guys. I don't have to tell you a lot about this chart because we are in a very manipulative market and there is a lot of manipulation going on. But what I think is the death cross coming for the Bitcoin, and that is a very huge news. I don't have to cover all the patterns and all the resistance and support thing, but death cross आ रहा है, उससे ज़्यादा आपको क्या देखना है? आप death, you just watch, you just see if there is a death cross and the prices are going drastically down, just start buying more coins because we are in the bear market then. If the prices are going drastically down, then I can't say that we are still in the bull market, but till now I can say that we are in the bull market. But after a drastic price dip in Bitcoin's price in this year, I'll say we are in the bear market. So that's it guys for today's video. And if prices are going down, just buy more coins because that is the best opportunity to buy coins at a much lower prices, because you won't get this opportunity after 5 or 6 months or a year later. So that's it for today's video guys, and also I have put a referral link to CoinSwitch Kuber where you will get 50 rupees worth of free Bitcoin if you tap the link to that is my referral link, if you tap the link down there in the description box. So that's it guys for today's video. Stay tuned. Thank you.